I hope दिख रहा है. Hmm. Thermodynamics part 2. Okay. Okay. ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है. आ, इस बार थर्मोडायनेमिक्स का लॉज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कोफिशिएंट्स है और कुछ टर्म्स है ऐसे बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहला देखेंगे फ्री एक्सपेंसिव. व्हाट इज फ्री एक्सपेंसिव? ओके. फ्री एक्सपेंसिव. व्हाट इज फ्री एक्सपेंसिव? Free expansion means the system is expanding. Okay, the system is expanding, uh, but freely. There is no pressure, no extra pressures. Okay, let I'm giving the example. Sorry for this drawing. Uh, this system is divided in two chambers. Okay, and in this part, it is vacuum. Okay, but in this part there are air molecules and gas or gas, you can see the presence of this. Okay. What I do that मैं इस partition को हटा देता हूँ. Okay. I remove this partition. If I remove this partition, then it will look like this. Okay. Hmm. Now look it. यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे या आइटम्स थे जो गैस मॉलिक्यूल्स थे. ठीक है. अब क्या हुआ कि हमने इस पार्टीशन को हटा दिया. इस पार्टीशन को हटाने के बाद ये मॉलिक्यूल्स इस पूरे कंटेनर को कवर कर लेते. लेकिन एक बात बता, जब ये पार्टीशन हटाया गया, ये बैरियर हटाया गया, क्या इसमें कोई फोर्स था? क्योंकि ये तो वैक्यूम था. इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था क्या? नो, देयर इज नो फोर्स. देयर वाज नो फोर्स और नो प्रेशर. ओके. नो प्रेशर means work done. What about work done? Work done PD. There was no pressure. Pressure was zero. So there is no work. Okay. Free expansion. What does it mean? Free expansion means delta Q is equal to zero. Okay. What is delta Q? Delta Q is heat supplied to the system. Okay. Or heat extracted from the system. Okay. This is delta Q. Then delta Q is equal to 0. But also one more condition is there, that is work done is equal to 0. Okay. If this 2 is 0, then what about the first law? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ जो हमने कल बताया था, और वो है U is equal to du is equal to dq plus, sorry, minus dv pd. Okay. PD. Delta q minus pd. Okay. This is the formula. So we can say that this is 0. Okay. This is 0 in the free expansion, and this is also 0 in the free expansion. Okay. Work done is 0. Then what about the du? Du will also be 0. Means what does it mean? Change in internal energy. Okay.
Change in internal energy is zero. Internal energy. Equal to- oh, hmm. Now, but it is in ideal. Okay, in if you see in the real case, it is not like that. Now we will see some thermodynamic coefficients. Okay. Thermodynamic coefficients. First coefficient. Okay. Let's start from bulk modulus. Okay. Bulk modulus. Bulk modulus. Okay. You know, bulk modulus is equal to stress by strain. Okay. What about this strain? This strain is pressure. This stress means pressure. What about the strain? Strain. Okay. Strain is equal. Strain is directly proportional to delta. Uh, sorry. It is. This is equal to delta V by V. Okay. And this change uh, also depends on the V. What is the volume? Okay. What is the volume? Okay. So stress is directly proportional to delta V by V. Hmm. So this bulk bulk modulus become uh, what stress means change in pressure. Okay. And this strain means dV change in volume by volume. Okay. So V into dP by dP by dV. But this process or this is in a condition that is in constant temperature. But in whole process change in pressure and change in volume, इस process में क्या होता है कि इसमें हम लोग टेम्परेचर को सेम रखते हैं. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ओके. सो second coefficient is isobaric expansion coefficient. Okay. Isobaric. Hmm. Isobaric coefficient. Isobaric. What does it mean? Isobaric. Isobaric means constant pressure. Okay. Hmm. Expansion change in volume delta V is equal to positive. Okay. Delta V is positive means the system is expanding. Okay. And this coefficient we denote alpha. Okay. Alpha. Alpha is the isobaric isobaric expansion coefficient. Okay. This alpha is equal to, as we know, it is expansion. Okay. We study the rate of expansion, but in constant pressure. Okay. Then it is dV by dt at constant pressure.
into 1 by, it is same like the strain. Okay, it's same like the strain. This dv by p, you know, this dv by p, it is same like the strain we did this one. Okay, this is the isobaric expansion. Here we study the change in volume with respect to time, and with respect to temperature. हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये जो वॉल्यूम ये चेंज होता है, वॉल्यूम सिस्टम को कोई सिस्टम को वॉल्यूम ये एक्सपेंड करता है, दिस एक्सपेंड्स, ओके, ये एक्सपेंड करता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये किस तरह से एक्सपेंड करता है, ओके, दिस इज isobaric expansion. Okay, now another one, that is isothermal compression coefficient. Okay, isothermal compress compression coefficient. Okay, isothermal means, what does it mean? Isothermal means constant temperature. Temperature is constant. Okay, and compression means change in volume in negative. Okay, change in volume is negative. So change in volume is negative. That means now this system is not expanding. ये compress हो. Okay, okay. This system is compress. ये compress हो रहा. Then what do you think? What do you think? क्या पढ़ने जाए? Same like this. Okay, same like this, but it is isobaric means constant pressure, but here it is isothermal. Okay, isothermal, that is beta. Okay, this coefficient is beta. Beta is equal to dv by, not dt is constant. Okay, dv by dt at constant temperature, 2 by, okay, and this dv is compression is negative, so we write here. Okay, okay. There is one more coefficient. No, okay. Hmm. One more coefficient, that is isochoric. Okay, isochoric expansion coefficient. Isochoric expansion coefficient. What about this? Isochoric means, what does it mean? Isochoric means volume is constant. Okay, here volume is constant. Uh, Isochoric, then it is gamma, that is equal to dp by dt at constant volume to 1 by. Okay,
This is isochloric expansion coefficient. Hmm. Let's see about this. Hmm. Compare this one. Compare this bulk modulus and isobaric expansion. Okay, yes, no. Huh. This isothermal compression, and this bulk modulus. This bulk modulus is uh, E is equal to V into dP by dV. Okay. If then 1 by B is what? 1 by B is equal to 1 by V dV by dP at constant temperature. See, it is similar to isothermal compression coefficient. This one. Okay. So then we can write this isothermal compression. Okay. This isothermal compression is equal to 1 by uh, mhm. Now, what is heat capacity? Okay, we are building some basic concepts. Without this one, we cannot move further. So we are getting this concept. build कर रहे हैं ये concept build कर रहे हैं. Then what is heat capacity? Heat capacity. Okay. Heat capacity means amount of heat needed. Okay, needed to increase increase 1 degree Celsius or 1 Kelvin of temperature. Okay. Hmm, temperature. This is the heat capacity. Then this is the amount of heat dq. Okay, dq by dt. Okay, hmm. This dq is equal to ms delta. Okay, this s is heat capacity. Okay, this delta q is directly proportional to mass. Okay, ये मास कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे जो डेल्टा क्यू है वो डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर का वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है. ओके, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर. दो ऑब्जेक्ट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना. देन mass, then it is called specific heat capacity.
specific heat capacity, that is heat capacity that is heat capacity capacity per unit volume, sorry, per unit mass, current mass called current mass or per unit mole. Okay, if gas is there, then we can say this is mole. And for the particles and heavy system, then we can say this is mass. Then also दो types of that is CV and CV. What is CV? CV means specific heat capacity. Okay, specific heat capacity in constant volume. And this, what is this CV? Specific heat capacity in constant test. Okay, heat capacity in constant volume and constant pressure. Specific heat capacity in constant volume, that is C. Okay. C. What is CV? What is CV? Okay. Uh, the first thermodynamic, that is D is equal to dq plus, sorry, minus pd. Okay. This is work and this is heat supplied or heat extracted. Okay. Then uh, we are we are saying that volume is constant. Okay, volume is constant. Volume is constant. Okay, if volume is constant, this is going to be constant. Then d is equal to dq, and we know what du by dt, that is equal to dq by dt, and this is in constant volume, that is equal to Cp. What I have to, the temperature, sorry, the heat energy we require to change in temperature is called heat capacity. And if per unit, if we are talking about per unit, one more, okay, then it is equal to Cp. Now, we write here du by dt is equal to Cv. Du is equal to Cv dt. Okay. What does if there is n mole? Okay, we can write d is equal to n Cv dt. Hmm. And this Cv is the um, specific heat in constant volume. Now, for
specific heat capacity, specific heat capacity in constant pressure. Okay, what about that? That is CP. Hmm? That is du is equal to dq minus p dv. P dv. Hmm. Du is equal to cv dt. Okay. Du is equal to cv dt. Okay. For any ideal case, for any ideal case, du is equal to cv dt. This is always true. Okay. So we can write d is equal to cv dt is equal to, this is happening constant pressure. Okay. dq minus p d. Hmm. Hmm. In ideal case, nRT is equal to p into v. Then v is equal to, yes, p is equal to nRT by, okay, it is right. Hmm. Then we can write cv dt, and it is in constant pressure. Okay. So here we take this n is equal to 1 now. Okay. So there is no n, you can see. If there is n, then there is n number of moles, then there will also be n, n CVDT. But there is no n CVDT, that is CVDT means n is equal to 1. Hmm? Then it will be CPDT. Hmm. Hmm? CPDT. And look about that. PV is equal to nRT if we do PdV plus, sorry, PdV plus VdP, that is equal to nR dt. Okay, this dp is equal to 0, then we can write pdv is equal to nr dt. So here we can write nr dt. Okay? Hmm. Then cv minus cp dt is equal to minus nr dt. Hmm. Cp minus cv into dt is equal to, okay, this n is 1, sorry, this n is 1, r dt. So cp minus cv is equal to, then cp is equal to r plus c. Okay, this is not always true, but it is always true for ideal gas. Hmm, ideal gas. But in general, cp minus cv is equal to t into del p by del t at constant volume into del v by del t at constant pressure. Okay, this is general formula. This is general formula. It is true for real gas and also for ideal gas. Okay. Hmm. Uh, is it true for ideal gas? Let's check. Okay.
But we written that Cp minus Cv, that is equal to T into del P by del T at constant volume and del V by del T at constant pressure. Okay. Good. For ideal gas, check for ideal gas. What we know that Cp minus Cv is equal to R. Is it true or not? ये सही है कि नहीं हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं देखो. What we write in ideal gas, that is Pv is equal to nRT. Okay, Pv is equal to nRT. Pv is equal to nRT. N is 1, so we can write Pv is equal to RT. Okay, if we want to find this one, okay, and del P by del T, okay, at constant volume. Let's volume is constant. Then what you can write here, that V dP is equal to R dt. Then dP by T dt is equal to R by hmm. Good. Now again for this one, okay. Is it right? Okay. Pv is equal to at constant pressure. Then what you can write, that is P dV is equal to nR dt. Then dV by dt is equal to n is 1. Okay. Then you can write R by P. Good. Very good. Then Cp minus Cv is equal to T into R by V into R by P. No, तो बड़े खुश हो रहे होंगे, ये सही तो नहीं निकला. But see here, this is P into V. Okay, how T is equal to R square into P into V. Okay, PV is equal to nRT. N is 1. PV is equal to RT. Okay. Then what you can write here, that is T into R square by RT. Okay. This is R. Cp minus Cv is the very Cp minus Cv is equal to R. It is also true for ideal gas. Ideal gas, and it is also true for real gas. No. Okay, let's come to the laws of thermodynamics. Laws of thermodynamics. First law is zeroth law. First law is zeroth law. Actually ये zeroth law बाद में निकाला गया था, बट ये इतना फंडामेंटल था कि इसको पहले निकालना, मतलब फर्स्ट लॉ देना बहुत जरूरी था. तो क्या हुआ कि हम लोग पहले फर्स्ट लॉ बना चुके थे. सो मैं नहीं, फर्स्ट लॉ पहले ही बन चुका था, सेकंड लॉ भी पहले ही बन चुका था. अब जब जीरोथ लॉ बना तो फिर उसको फर्स्ट लॉ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो पहले ही बना था, इसीलिए उसको जीरोथ लॉ बोला. दिस वाज then what, let's see what is zeroth law. जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि
एनी सिस्टम ए, कोई एक सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ, ठीक है। दिस इज ए सिस्टम एंड दिस इज बी सिस्टम एंड these are in thermal equilibrium. What does it mean? Thermal equilibrium का मतलब क्या है? Thermal equilibrium, okay? Thermal equilibrium मतलब इसके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। कोई हीट एक्सचेंज, नो एक्सचेंज। नो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? जीरो। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? जीरो, सॉरी, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर हम बोल रहे हैं कि ए और बी ये एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों का टेम्परेचर सेम, यानी इफ A is having temperature T, then B will also have temperature. Okay. Now what I say that now B is thermal equilibrium with C. Hmm. Means no heat exchange, no heat, no heat exchange. Okay. No heat exchange means delta Q is equal to 0. That means delta T is equal to 0. Means they also have the same temperature. Okay. Means B had temperature T. Okay. Then C also will have temperature T. You can see this A and this will also be in thermal equilibrium. जीरो तो ही बोलता है कि अगर कोई भी सिस्टम ए है और कोई भी सिस्टम बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम है और कोई अनदर सिस्टम सी है, अगर वो बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो ए सिस्टम और सी सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द जीरो। Okay, now let's come to first law. Okay, first law of thermodynamics. First law of thermodynamics actually ये बोलता है कि energy is conserved. It cannot be destroyed, nor recreated. ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता है एनर्जी, ना क्रिएट हो सकता है। मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, एक सिस्टम, ओके, एक सिस्टम है और हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो इसका जो इंटरनल एनर्जी वो बढ़ गया डेल्टा, लेकिन इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पर है? ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा क्यू एंड वर्क। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा मीन्स हीट सप्लाई। ये डेल्टा क्यू इसलिए बढ़ गया होगा क्योंकि हम लोग हीट यहाँ से सप्लाई किए होंगे, ठीक है, या फिर इस पे कोई वर्क डन किया होगा। अच्छा, एक बात, ये सिस्टम है, इस पे कोई अगर वर्क डन करेंगे, बाहर से कोई वर्क डन किया जा रहा है, तो इसका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड
this work done is equal to pdv, है ना, work done is pdv. If volume is decreasing, this is minus negative, then work done is negative, है ना, means work done is negative. Okay, so इस पे वर्क डन किया जा रहा है। या फिर ये अगर ऐसा ऐसे कहा जाए कि दिस इज एक्सपेंडिंग, मतलब ये जो सिस्टम जितना वर्क कर रहा है, ठीक है, ये अगर वर्क करेगा मतलब एक्सपेंड होगा, अगर सिस्टम एक्सपेंड होगा तो हम लोग क्या होगा, डी यू इस पर कंबाइन, ठीक है, इस लाइक डी यू प्लस पी डी, ओके, डी वी इज डी means expansion. I am talking about distance. U plus PdV, work done is positive. Okay, work done is positive. Du plus PdV is equal to dq. क्या बोला जा रहा है, heat supplied, okay, depends on du, change in internal energy. ये कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या उस पर कुछ वर्क डन किया गया हो या फिर वर्क डन कर रहा हो, और डिपेंड करता है कि उसने कितना हीट सप्लाइड किया है और वो हीट कितना सप्लाइड। तो एनर्जी चेंज, एनर्जी कभी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी इस वर्डन पे या इस डी डब्ल्यू पे, मतलब इस डी क्यू पे, मतलब हीट सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड पे ये खर्च हो रही है। ये क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी है डी यू ये लॉस नहीं हो रही, नो, नो लॉस, ओके, नो लॉस, ठीक है, कभी लॉस नहीं होती एनर्जी, कभी लॉस क्या होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। सो वी राइट डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी, मीन्स डी क्यू माइनस so we write here dq means जितना हीट सप्लाई किया, ओके, जितना हीट सप्लाई किया, मान लो एक कंटेनर है इस तरह से, इस पे हीट सप्लाई किया गया, ठीक है, हीट सप्लाई किया, इट हीट सप्लाई की वजह से, इट हीट सप्लाई की वजह से ये सिस्टम कुछ वर्क डन करता है, दैट इज पी डी, ठीक है, देन व्हाट इज द लेफ्ट एनर्जी, मतलब पूरा वर्क डन तो हुआ नहीं होगा, पूरा वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है, पी डी मतलब डेल्टा क्यू माइनस पी डी, दिस इज द लेफ्ट एनर्जी, ओके, ये वर्क डन के थ्रू ये निकल जाता है, ये सिस्टम को वर्क डन कर रही है, ये वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, मैंने कहा पी डी वी इज एक्सपेंड, मतलब वॉल्यूम इज एक्सपेंड, ठीक है, मीन्स ये जो एनर्जी बच रही है, मतलब ये जो डेल्टा क्यू सप्लाई की वजह से यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है, ठीक है, कुछ वर्क डन हो रहा है, तो ये वर्क डन कुछ एनर्जी वर्क डन पे चली जा रही है, ये जो हीट सप्लाई किया गया कुछ वर्क डन, कुछ हीट एनर्जी उसके वर्क डन पे चली गई, तो ये जो लेफ्ट एनर्जी है दिस विल बी इंक्लूडेड इन डी, ये किस पे करें, ये क्या करेगा, इसका इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें। अच्छा, आइडियल गैस का जब बात करते हैं, आइडियल गैस है, ये क्या लिखा, आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके कॉम्बिनेशन से होती है, इंटरनल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके, or between the atoms, between the particles, but there is no interaction in the ideal gas, so potential energy is equal to 0, okay,
If potential energy is equal to 0, then internal energy will be directly proportional to kinetic energy. ओके, इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना भी डेल्टा क्यू माइनस वी डी वी है, इस जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई है वो इंटरनल एनर्जी में जरूर जाती है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी के वजह से, इंटरनल एनर्जी के चेंज के वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है ना। यू कैन रिलेट दिस, इससे रिलेट करो कॉन्सेप्ट को समझो। दिस इज डेल्टा यू मीन्स चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को ये बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। अगर डेल्टा यू इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव है ना, तो डेल्टा यू इज नेगेटिव, देन व्हाट डज इट मीन, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग है ना। if delta u is positive, what does it mean, sorry, right here, if delta u is positive, then kinetic energy is increasing। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। गुड। नाउ सेकंड लॉ, दिस इज द मोस्ट सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है हीट cannot spontaneously flow from colder to hotter object without any external load। ओके, क्या आपने कभी देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अभी हॉट था, मतलब नॉर्मल होता रूम टेम्परेचर पे 300 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन, सॉरी लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस। ये अचानक से ठंडा हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये रूम टेम्परेचर से कभी भी ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कभी भी एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता कि कोल्डर एनर्जी से कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में एनर्जी चली जाए। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 डिग्री सेल्सियस, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 या 30 डिग्री सेल्सियस, जो 30 डिग्री सेल्सियस। कभी ऐसा हो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस में हो गया,
मतलब ये दोनों क्वांटिटी हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस में हो गया और ये बढ़ के 32 डिग्री सेल्सियस या कोई, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये क्या होगा, जो हीट फ्लो होगा इस वाटर ऑब्जेक्ट टू पोलर ऑब्जेक्ट है ना, लाइक दिस। गुड। तो ऐसे होता है। हाँ, ये बात करते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस। जब तक इस पे वोल्टन ना करें, जब तक इसमें हम वोल्टन ना करें, तब तक ये फोल्डर से होटल में ये सब हीट फ्लो नहीं होता। अच्छा, एग्जांपल आप मानो कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है कि कहीं कोल्ड से हॉट में जा रहा है बाय यूजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज? रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट गर्म होता है, वो धीरे धीरे फोल्डर की हॉट से। हम लोग आएंगे कार्नोट इंजन पे, आएंगे उस पर बात करेंगे जब सेकंड, तब सेकंड लॉ पे आगे आगे बात करते हैं। बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बारे में हम देखेंगे, बट देयर इज सम more tools. Okay, there is some more very important tools. First is entropy. What is entropy? Hmm. Entropy. Entropy means randomness. Okay? Randomness. एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। तो ये रैंडमनेस क्या होता है? ऐसा बोला जाता है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, ऑलवेज इंक्रीजेस, नॉट एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस क्या मतलब हुआ इसका? रैंडमनेस बढ़ती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑर्डर पे है, ओके, जो ऑर्डर पे है, जो वो ऑर्डर, ये एक ऑर्डर पे, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा कि डिसऑर्डर पे आ जाएगा। हम्म, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑर्डर पे था, ये सिस्टम ऑर्डर था, लेकिन अब ये डिसऑर्डर पे आ चुकी है, मतलब अब इसका कोई ऑर्डर नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, यहाँ एंट्रोपी जो था ऑर्डर पे, एंट्रोपी इंक्रीज घटी थी और एंट्रोपी इसमें बढ़ी। ठीक है, क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, भले ही तुम्हारे बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, क्या होता है कि पहले तो बहुत नया होता है, ठीक है, बहुत नया होता है, बहुत अच्छा दिखता है, ऑर्डर पे होता है, लेकिन क्या होता है धीरे 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 उस पर वो क्या होता है, डिसऑर्डर होने लगता है, मतलब उस पर कहीं सीमेंट गिर गया, कहीं से चूना गिर गया, ये कहीं टाइल्स से पड़ गया ना, तो क्या होता है डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पहले पहले नया रूम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छे से रखते हैं, हाँ सब कुछ ऑर्डर में रहता है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे आप उसको डिसऑर्डर, आप अपना रूम डिसऑर्डर करने लगते हैं, एक कुछ नया सामान आया, ठीक है, फिर उसको वो ऑर्डर, और जहाँ पे वो पुराना सामान था उसको हटा दिया या नया सामान हटा दिया, फिर वो इधर उधर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, डिसऑर्डर। ठीक, तो क्या होता है कि जो आप जब तक उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो डिसऑर्डर रहेगा, कि हाँ आप फिर से उसको ला के रखें। ठीक, तो क्या होती है कि एंट्रोपी मतलब उसमें क्या होगा, अब जब आपका सामान इधर उधर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी, दिस इज एंट्रोपी। हाँ, हाउ वी राइट दिस,
dq is equal to tds. Okay, then s is equal to dq by t, है ना? sorry, ds means change in entropy. Change in entropy is equal to change in heat energy by temperature. Okay, so what is dq here? Okay, that is mc delta t. Okay, then ds is equal to बन गया क्या? what is c here? specific heat capacity. What? Specific heat capacity. So we can write mc dt by t. देखो ये जो फॉर्मूला ये कहाँ यूज हो सकता है? ठीक, मान लो आपके पास क्या, आपके पड़ोस में आपके पड़ोस में एक बड़ा सा तालाब, ठीक है, और उस पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास एक रोड है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप क्या करते हैं कि इस रोड को ठंडा करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इस रोड को जाके यहाँ डिप कर। अब क्या होगा, इस रोड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया 80 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या, ये तालाब का पानी गर्म हो जाता है, ये 30 डिग्री सेल्सियस से रहता है ना, then this T is 30 degree Celsius, okay, and this delta T is equal to 80 degree minus 30 degree Celsius, okay। हम लोग इसको इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। then ds is equal to mc delta T by T, ये 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 303 Kelvin, and delta T is equal to 80 minus 30, then mc 30 minus 30 minus 30, that is 50 by 3. This is the change in the entropy. Now इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, that is dt by dt means mc ln, but there will be change in temperature, okay, T1 to T2, that is mc ln T2 minus ln T1, that is equal to mc ln T2 by T1, means ds is equal to mc ln T2 by T। अगर ऐसा सिचुएशन ना, अगर ऐसे होता कि टेम्परेचर चेंज हो जाता तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। Now next, then what about the first law? Okay, first law, that is du
is equal to dq minus work done. Okay, and now we know dq is equal to tds. Okay, then du is equal to tds minus work done. Then we write tds is equal to du plus w. Okay, du is CVDT and plus work done is P du. Then ds is equal to CV by T into dt plus P by T into dt. Okay, PV is equal to nRT. Then P is equal to nRT by P. Okay. Then we can write CV by T into dt, sorry, plus n. Let n is equal to 1, sorry 1, no, n is 1 mole. Then RT by V into T into dV. Oh, yeah, it is dV, sorry. This dV. Right? So this dt cut out and CV into ln t, that is t1 to t2 limit. Okay, this ds, hmm? S is equal to plus r into ln v v1 to v2. Can write cv ln t2 by t1 plus r into ln v2 by v1. Good. We can do it like this. Now, if you want to write it in the form of pressure, then we know PV is equal to nRT. And means P1 is equal to RT and P2 is equal to RT2. Then V1 is equal to RT1 by P1 and V2 is equal to RT2 by P2. But then what you can write? You can write okay, V2 by V1 is equal to what? R bar will be cancelled. V2 by P1 means T2 P1 by T1 P2. Right? Then we can write S is equal to CV ln T2 by T1 2 by T1 plus R ln, okay, you can write like this, T2 by T1 into P1 by P2. So you write T2 by T1
into P2 by P1. Then by properties of ln we can write Cv ln T2 by T1 plus R ln T2 by T1 plus R ln P1 by T2. Okay. Then Cv plus R ln T2 by T1. Okay. Minus R ln P2 by T1. This is P2 by P1. See, this is P2 by P1 and here it was P1 by P2. Okay. So there is minus 2. Now here we know Cp minus Cv is equal to RT, sorry R in ideal case, and then Cp is equal to R plus Cv, this one. So we can write this one as Cp. Then this is equal to Cp ln T2 by T1 minus R ln T2 by this is the another formula of entropy. ओके ओके, अब स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अगला लेक्चर पे हम लोग देखेंगे फेस ट्रांजिशन के बारे में। फेस ट्रांजिशन कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कौन सा पैरामीटर्स है जिसके वजह से फेस ट्रांजिशन होते हैं। सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेस ट्रांजिशन कैसे होता है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ओके ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।